and welcome to Credence Digital Learning. I am your English teacher Astha Jain and we are discussing class 12th English syllabus. Today we are going to start with yet another interesting chapter that is titled as Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. Talking about the justification of title, एक ऐसी यात्रा जो कि पृथ्वी के अंत को दर्शाती है. Let us first talk about the theme. Tishani's visit to Antarctica, the coldest, driest and windiest continent in the world, aboard the Russian research vessel academic Shlokelski, gave her a deeper understanding and the better perspective to the damage that is caused by human impact on the earth. तो तिशानी डोसी जो कि एक रशियन वेसल में जिसका नाम था academic Shlokelski, एक रिसर्च के लिए अपने ग्रुप के साथ जब एंटार्क्टिका पे गई, जो कि विश्व का सबसे ठंडा सूखा कॉन्टिनेंट है, वहां उसे पता चला कि इंसान के कर्मों का क्या इम्पैक्ट हो रहा है प्रकृति के ऊपर. एंटार्क्टिका दो अनपॉपुलेटेड हैज बीन अफेक्टेड. तो एंटार्क्टिका जहां पे कोई इंसान रहता ही नहीं है, वहां की भी कंडीशन बिगड़ती हुई दिखाई दी इंसान के इंटरफेरेंस के कारण. दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर. So let us understand the chapter. So as I told you, Tishani Doshi joined Students on the Ice program. तो एक प्रोग्राम था जिसका नाम था Students on the Ice, उसको टिशानी ने ज्वाइन किया. And the head was Geoff Green, who was from Canada. और ये जो Geoff Green है, ये क्या करते थे? ये केवल हाई स्कूल के बच्चों को ही ऐसे ट्रिप्स पे ले जाया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बच्चे ही फ्यूचर सिटीजन्स हैं और यही जो है इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाले हैं ऐसी एजेंसीज का जो कि पॉलिसीज फ्रेम करेंगी. So it is very important that the students should actually know what is happening around so that they can take impactful decisions in the future. As it has been already discussed in the theme, they were going in a Russian ship vessel that was named as academic Shlokelski. They crossed almost 9 time zones. It was an overall 100-hour journey which included journey in aeroplane, ship and car. तो अब जो है ऑथर पहले के बारे में बताते हैं when humans were not inhabiting the planet. तो जब इंसान planet पे नहीं थे, there was just an entire piece which was called as Pangea. Pangea had 2 parts. One part was titled as Gondwana and another part was titled as Laurasia. जब इंसान ने इस पृथ्वी को इनहैबिट करना शुरू किया तो कॉन्टिनेंट्स बने और कॉन्टिनेंट्स में से देश बने. सो द एंटायर वर्ल्ड, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल सी एज इफ इट इज अ जिगसॉ पजल. जब हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो जिगसॉ पजल की तरह दिखाई देता है, क्योंकि इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. शुरुआत में तो केवल एक बड़ा सा पीस था. लेटर ऑन इट गॉट डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स एंड देन नेशंस एंड देन स्टेट्स एंड कंट्रीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस. सो वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड वी ऑल नो अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग. तो वही चीज वहां पे भी हो रही है. द आइस शीट्स आर मेल्टिंग कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हिच इन टर्न इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. देन द राइटर ऑल्सो टॉक्स अबाउट फाइटोप्लैंक्टन्स. नाउ व्हाट आर दीस फाइटोप्लैंक्टन्स? Phytoplanktons are those plants which are actually nourishing the southern ocean. अब ये जो है सनलाइट को यूज करते हैं और ये नरिश करते हैं सदर्न ओशन को, लेकिन जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो इनका इन फाइटोप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन पे भी इफेक्ट होता है. सो वी ऑल नो दैट व्हाट ऑल थिंग इज हैपनिंग इन द नेचर, व्हाट ऑल थिंग्स वी आर डूइंग विद द एनवायरनमेंट इज causing a lot of harm, and that is why we see a lot of disasters happening around, a lot of natural disasters which are out of reach for humans, and because of all these things the entire food chain is getting impacted. So while their Russian vessel was moving ahead, their ship was caught between Peninsula and Tadpole Islands. और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत हम पैदल ही चल लेंगे. The last part of their journey was titled as Walk on the Ocean and they had ice sheets beneath them. और उन ice sheets के नीचे जो है saline water था और वो सभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि क्या होगा अगर एंटार्क्टिका का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो all the ice sheets will definitely melt and that will lead to submerging of the low-lying areas, जो हम हर बार ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स में पड़ते हैं. तो देखा हमने कि कैसे इंसान का इंटरफेरेंस एनवायरनमेंट में उसके बैलेंस को बिगाड़ रहा है. एंड वी ऑल नो इट प्रीटी वेल. वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th chapter Ailing Planet. It is not the survival of the humans, it is actually the survival of planets which is at stake. And we also know pretty well that we don't live in a system of domination, we live in a system of partnership. हम survive नहीं कर सकते अगर हमारा planet survive नहीं कर पाता है तो. Because ultimately nature is the healer, ultimately nature is the nourisher and nature is the provider. So that's all with the chapter Journey to the End of the Earth. You will see some practice questions displayed on the screen. Kindly practice them. We'll be meeting to discuss yet another chapter. Till then, take care. Thank you.